sir. Good Good morning. morning. Thank you. आप अपना परिचय दीजिए. My name is Aman Patel. I'm from Hajipur, Bihar. I have done my graduation in electrical engineering from IIT Roorkee. Then after I was employed as a software engineer in CureFit for 2 years, more than 2 years. You have got a topsy-turvy career so far. You decided to go for electrical engineering, then you went to software engineer, software developer, and then now you have decided to come to civil service. Yes, sir. You seem to be a little bit indecisive in your decision making. Not so much, because for my choice for electrical engineering was like I wanted to choose between an old IIT and computer science, but since my rank was not enough to get a CSE in old IIT, I went for electrical engineering because there are greater opportunities in older IITs. So that why I choose the electrical, and then I studied software from my side, as well as there were a few courses in my electrical engineering also, which were on that line. Okay. You tell me, Aman, that you did your electrical engineering with a purpose. What was that purpose? Why did you do electrical engineering? Because it opened up like various career opportunities for me. Like it had components where I can go in electronics engineering, or in the core field of electrical engineering, or even in software field. So that's why, because there were so many opportunities, that's why I chose electrical engineering. But you see, whatever was the purpose, but at the end of the day, your purpose has changed. Yes, because as we go along in our life, there are new things that come. So it keeps on changing. Yeah, it might be bad or it might be good, but we can only decide when we switch to other things. So now, maybe after 5 years, again the purpose will change. You'll quit civil service and you'll become a politician, or you'll start running an NGO. It can happen, because your track can records happen if it serves a good purpose so, in but my you see, life. And it seems that you are you are a bit selfish. Number two, a lot of money has been spent for this particular course called electrical engineering, and you do not know the importance of resource management. You also very much weak in time management, because you wasted precious time, and you're not a career oriented person. You seem to change from here to there. So why should we select you? because what I think is that whatever I have done till now, it has served a purpose for me and for what I want to do. Because nothing goes, nothing is like it has no use. Whatever I have learned till now, it will have use in my life and Okay, let's talk about something else, right? Aman, you play football. It's a hobby. Yes. Can you tell me that when a player commits a sort of foul inside the penalty box, but referee doesn't give a penalty, under what circumstances it can happen? It can happen when the foul is not that grave, and when the foul is such that the attacker or the striker is fouled when he is not directly, he has the opportunity to score the goal. If someone fouls him when he has the opportunity, he will be awarded a penalty as well as a red card. Okay, tell me that why Indian football is lagging behind as compared to the European football? So there are multiple reasons for it. First and foremost is that there is popularity of cricket from long time back, which has overshadowed almost all the sports. Second is the weather that is here, because football is mainly played where there is cold climate, because it's a high intensity game. Are you sure? There are so many football playing nations where the climate is not definitely cold. Yes, there might be, but all the other things are also at that factor that are playing. So you cannot associate this thing with climate? Not fully, but
as I have seen that the teams that have performed better and the clubs that are there, which are very huge, they are mostly located in that part of the regions, and they mostly play football during the winter season also. Okay, right. The last question from my side. See, you are an event coordinator, right? You have got some extracurricular activities in event coordinator. What do you understand by this event coordinator? So, in my college, IIT, there is an annual festival, right? A cultural festival called Thomso. There many events are organized, like hundred of events. Like what I coordinated was the event of having a like an amusement park where there were multiple sporting events like that of kabaddi or zob ball and other like things, football, but in a shorter ground. So this event I completely managed on myself, and there were like thousands of participants who participated in that game. Tell me, if you become an officer in civil service, and let's say you are the district magistrate, and the chief minister of your state is visiting your district, how are you going to coordinate this particular event? So there are multiple things. First of all is to provide him, the chief minister, with the unobstructed pathway to where he is going to the event. Other thing is providing him the security by employing adequate number of police personnel to ensure that there is security in his caravan. And other thing is to manage the ground itself where the event is happening by providing all the facilities like that of sanitation, drinking waters, and barricades, sitting places, overhead roofs, if it's in summer season. And these all things can be managed with proper planning. Okay, can you do it on your own? I cannot do it on my own. I require my colleagues. As an event manager or event coordinator, don't you think that the first thing you have to do is to recruit or select the right persons for the right job? Yes, sir. There are so many things involved. Yes, sir. I had many members working together in that team. I was not alone. So I had like at least 10 members, me being the senior and rest of them being almost 1-2 with the same, and other were juniors whom I guided, and they presided over each individual events, and I guided them how to conduct this event in a good manner. Okay. But I'm finding something amusing over here. You did not talk about planning. You did not talk about organizing. You did not talk about staffing. You did not talk about coordinating. You did not talk about budgeting. You did not talk about reporting. And you did not talk about the feedback. So what kind of event coordinator you are? So, thank you. Okay, so your optional subject was physics. Having electrical engineering background, why did you choose physics as an optional? So my foremost thing was to see that the syllabus is almost as close and not too vast because of the time constraints in preparing the subject. So electrical had the concepts of physics also, which I had learned, and then physics was a little bit shorter in the course-wise length. So that's why I chose. Okay, so have you heard of the term superconductor? Yes, sir. Give me 5 features of a superconductor. Okay. First of all, superconductor can only happen in certain materials like that of ceramic superconductor or thallium, lead, mercury alloy, and other lead is mercury alloy. Are you sure? Yes, sir. It is a type of type 2 superconductors. It can be made in a superconductor beyond when we lower its temperature below a certain critical temperature, it can be made into a superconductor. And other thing is that it is perfectly diamagnetic. It will not allow any magnetic field to be inside the superconductor.
Can we achieve superconductivity at room temperature? Recently, there was in news that some scientists allowed some scientists observed superconductivity at the room temperature, but after some time, it came out that it was not possible. So till now, with the current technology, it is not possible to have superconductivity at the room temperature. So, have you heard of the term LK99? A new superconductor which is being claimed that it will. Yeah, that was in, I didn't remember the name, but that, yes, that was in the news, but it was later said that it is not a superconductor. Okay. What is this gravitational wave? So gravitational wave is ripple in space-time continuum. We know that space is like a two-dimensional. If we stack multiple two-dimensional, it will create a three-dimensional space. And time comes from that any object, anything, it bends time. Right? So when we have a disturbance in this continuum, then it generates gravitational waves. So any particular project that is being set up in India to study the gravitational wave? Yes, sir. A LIGO observatory is being set up in Maharashtra to study the gravitational waves. And have you heard of this Aditya L1 project? Yes, sir. What is this project? It is a project. It is a satellite. You cannot call it. It's a spacecraft that will go near the sun L1 at the L1 point, Lagrange 1 point, and study the sun's temperature, its coronal mass ejections, its surface temperatures, and other things. What is this L1? There are 5 points. So when we have two bodies, there are 5 points around. What is this L1 called? Lagrange point 1. Lagrange. What is this Lagrange point? It's a point where there is stability when there are two two mass objects with mass. When they are pulling, suppose they are applying gravitational force, then there are some points where they will have equal forces, and then that point will be stable, and so you will not need much energy to hold a spacecraft there. So that's why Lagrange points are used. Okay, my last question to you. You have mentioned that there are 5 Lagrange points. Yes. Why did we choose L1 for this Aditya L1 space mission? Because it will always face the sun, and it will be between Earth and sun, and then it will always be facing sun, so it will be easier to get back the data from it also, and we can observe the sun at all the times. अमन, yes, sir. बिहार की मूल समस्याओं के बारे में बताएंगे आप कुछ? सर, बिहार की मूल समस्या में सर सबसे मुझे सीरियल वाइज बताइएगा। सबसे पहला समस्या सर जो मुझे लगता है कि वो है इंडस्ट्रीज की समस्या, दूसरी बाढ़ की समस्या, तीसरी एजुकेशन की समस्या है, और चौथा जॉब की समस्या है। पहले इंडस्ट्रीज ही क्यों है भाई? क्योंकि सर इंडस्ट्रीज अगर नहीं होंगे, नहीं एडुकेट नंबर में होंगे, तो सर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सही से जनरेट नहीं हो पाएगा। जो ये स्ट्रक्चरल हमारे तो इंडस्ट्रीज से पहले एजुकेशन नहीं होना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट का नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था सर, बट स्किल नहीं होनी चाहिए थी? होना चाहिए था, बट सर मेरा कहना ये है कि आप पहले इंडस्ट्रीज लगाना चाहेंगे जो अभी ऑलरेडी जो स्किल्ड लेबर फोर्स है। अभी आप सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाना चाहेंगे, उसके बाद बाढ़ से निपटना चाहेंगे, फिर एजुकेशन पे ध्यान देंगे, और फिर रोजगार पे ध्यान देंगे, यही कह रहे हैं? हाँ। आपके लिए सबसे पहले स्किल, एजुकेशन महत्व नहीं रखते? रखते हैं सर, बट बाढ़ को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, बट आई थिंक इंडस्ट्रीज ऊपर होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज ऊपर होगी। हाँ। भले ही आपके पास वो रिक्वायर्ड जो लोग हैं वो नहीं होंगे सर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर सर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो ऑलरेडी स्किल्ड है, एजुकेटेड है, उनको ऑलरेडी अभी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अब अगर हम आपको ये कैसे मालूम है कि जो लोग स्किल्ड हैं, अभी जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं? कैसे मालूम है? कौन सी रिपोर्ट है आपके पास कि जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं?
मतलब मेरे कहने का मतलब है सर कि सारे स्किल्ड नहीं है, बट कुछ लोग मतलब हैं ऑलरेडी स्किल्ड है, बट उनको यहाँ जॉब नहीं मतलब आप इंडस्ट्री के चक्कर में 4-5 साल आप अगर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो एक टाइम लगेगा। उस टाइम पीरियड के लिए आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में बाकी लोगों को इंतजार करा सकते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अगर हम एजुकेट करें लोगों को, उनको स्किल्ड करें, तो वो जो अपराइट होंगे और फिर उसके साथ साथ हम इंडस्ट्रीज को शुरू करें तो हम उनको बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगा देंगे आप, तो कैसे करेंगे? और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए भी तो स्किल्ड लोग चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो आप बाहर से बुलाएंगे, वो तो बाहर से बुलाएंगे ना, बाहर से बुलाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार के को क्या मिलेगा, जैसे झारखंड को क्या मिलता है, वहाँ की जो खदानें हैं, खाने हैं, या बिहार की भी जो खदानें हैं, उन पर किन का कब्जा है? मैंने इसी लिहाज से आपसे पूछा था बिहार के संदर्भ में। चलिए, आपने एक बात कही थी कि कुछ भी बेकार नहीं जाता है, जो भी ज्ञान ले लीजिए सब कुछ काम आता है और हर जगह कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि आज का दौर जो है वो ज्ञानी लोगों का है या एक्सपर्ट्स का है? आप बहुत सी चीजें जानते रहिए, उनका है या एक्सपर्ट्स का है? सर ये तो डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स की जरूरत है और कुछ फील्ड्स है जहाँ पे, यानी आपको ये लगता है कि जो ये क्षेत्र है बीपीएससी का, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा फील्ड बताइए जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वहाँ पे वो एक टाइप ऑफ जनरलाइज सर्विसेज है। वहाँ पे आर्ट्स के बैकग्राउंड के भी लोग आते हैं, साइंस के भी आते हैं, तो और उनके लिए कोई सोशल एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। सोसाइटी को समझते हो, किनके लिए काम करना है वो, एक मिनट, किनके लिए काम करना है वो समझते हो, क्या रूल रेगुलेशन है वो समझते हो, क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है गवर्नमेंट का वो समझते हो। आपको ये लगता है कि ये एक्सपर्टाइज नहीं है, ये चीज़ें एक्सपर्टाइज नहीं है, तब तो आपके अनुसार तो डिप्टी एसपी को कभी एसडीएम बना देना चाहिए, कभी एसडीएम को बीएसए बना देना चाहिए, कभी बीएसए को एसडीएम बना देना चाहिए। क्योंकि क्या जरूरत है फिर एक्सपर्टाइज की? एक्सपर्टाइज की जरूरत ही नहीं होगी, कोई भी आदमी कहीं भी कुछ भी कर लेगा। सर बट ये जो सर्विसेज हैं वो बहुत सारी चीजें देखती है ना, तो सर अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो किसी एक ही फील्ड में क्या देखती है? एसडीएम क्या करता है? सर लॉ एंड ऑर्डर का काम करना एसडीएम का काम है। लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में एक लोक सेवक क्या देखता है, हमको यही बता दीजिए, छोड़िए बाकी सब। एक लोक सेवक का काम क्या है? सर गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फिर जो सामाजिक सुरक्षा है उसको लागू करना, और इसके लिए किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। जो आप बता रहे हैं वही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो भी आप बता रहे हैं इसके लिए किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ा आपने आज? नहीं सर, आज तो क्योंकि जल्दी आना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अमन, कैसे लगा आपको? सर मैंने दौड़ा तो पीछे आइए, पीछे अपने आप को पीछे बैठिए। हाँ। यस, ये हाँ बताएं। हाँ सर, मुझे लगा मैं थोड़ा सा फंस रहा था, मतलब लाइक कहीं कहीं मुझे भी लग रहा था कि मैंने सटीक आंसर नहीं दिया। अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ, आप जरा, आपके पास तो वीडियो भी रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। एक तो ड्रेस आपका फॉर्मल होगा। हाँ, ये तो जब आप आते हैं तो हाथ पीछे नहीं रखते हम लोग, है ना, हाथ एकदम सामने रहेगा। हाँ, दिस इज द पोजीशन, है ना, ऐसे रखते हैं हम लोग जब खड़े होते हैं आप, है ना। आपका जो मेजर प्रॉब्लम है, हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब इट वाज समथिंग जिसको हम इंग्लिश में कई बार ऑडासिटी बोलते हैं। किसी सीनियर के सामने अगर ऐसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो कुछ उस लेवल का हो रहा था, उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, या 0.1% अगर आप कर पाते तो हाथ ऐसे ही रहेगा आपके थाई में, शुड लाइक दिस। हाँ, थोड़ा बहुत जो नेचुरल थोड़ा सा मूवमेंट हाथ ऐसे ऐसे हो तो वो ठीक है, बट इट वाज वेरी वेरी इंसल्टिंग।
आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपको स्ट्रेट देखना पड़ेगा, है ना। और इनफॉर्मल वर्ड्स आप यूज़ कर रहे थे, जैसे या नाम का कोई चीज़ फॉर्मल उसमें इंग्लिश में नहीं होता है। मुझे लगता है आपका नेचुरल जो लैंग्वेज वो हिंदी होना चाहिए, देख लीजिएगा। आप इंग्लिश में उतना कंफर्टेबली नहीं बोल पा रहे थे। आपका जो मेजर इशू है, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे आप चीज़ों को। हो सकता है आपके पास नॉलेज है पर उसको बहुत ही प्रिसाइजली टू द पॉइंट बताना जो है वो नहीं हो पा रहा था। कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रहा था, मतलब यू रेड बट यू डिड नॉट रीड इट थॉरली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज देयर। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अदरवाइज आपके पास मतलब जो है वो है कि आप बोल सकते हैं, जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बोल पाते हैं, वो हेजिटेशन नहीं है और यू आर ए गुड कैंडिडेट। बट इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम और बेटर होगा। सर वो जो ये क्वेश्चंस था जिसमें मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया, सर इसको और बेटर वे में कैसे बोल सकते हैं? बेटर ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो आप आंसर दे रहे हैं उसको वो तो आपको लॉजिकल होना चाहिए। एक लॉजिक अगर आपने दिया है, फिर 2-4 मिनट के बाद ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन जहाँ पे कुछ और लॉजिक आप दे रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर मुझे ये पता है कि आप एक्स के ऊपर विश्वास रखते हैं और लाइफ लॉन्ग रखते हैं, तो आप मेरे लिए मतलब आई कैन ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि ये इंसान, अगर इनसे पूछूंगा तो बोलेगा एक्स इज गुड। प्रॉब्लम कहाँ पे, आज आपने बोला एक्स, कल बोला वाई, परसों बोला जेड, तो इससे क्या होगा कि मैं आपके ऊपर कैसे भरोसा करूँ? आप समझ गए? एक्स हो सकता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, आपके लिए है, पर मुझे ये पता है कि आप एक्स के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी इन माइंड आपके थॉट में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोर देन स्किल ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट। Trust is important. How can I trust you? Even if you are the best of the best, but if I cannot trust you, then I'm not going to assign any task. ठीक है ना? तो इसका ध्यान में रखिएगा। स्टैंड एक ही होना चाहिए। जो लॉजिक आप दे रहे हैं वही लॉजिक आपका लास्ट में भी काम करेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।